A very good afternoon, dear students. So, for today, we are going to learn the change of voice, especially how to change the interrogative sentence from active voice into passive voice, and of three tense, that is present, past, and future indefinite. So, first of all, we will begin with the present indefinite tense. Let's get started. Okay, now here you can see that it is present indefinite tense, and I have written an example. Who teaches you history? Now whenever you got a sentence like this which starts with who, then what you have to do after that, you can see that this is verb's first form, then object, then history is rest of the sentence. Okay, then who will be changed into by whom. After that, it is present indefinite, that's why we will put a helping verb. So you is object and before you we have to put are. Okay, now by whom, who is converted into by whom, then the helping verb are, then the object is you after the verb's third form teach, taught, taught, then rest of the sentence history. ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਰਾਜੇ, ਬਾਈ ਹੋਮ ਆਰ ਯੂ ਟੌਟ ਹਿਸਟਰੀ। ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਹੂ ਨਾਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸਟਾਰਟ ਹੋਵੇ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਚੇਂਜ ਦੈਟ ਆਲਵੇਜ਼ ਇਨਟੂ ਬਾਈ ਹੋਮ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈ ਹੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੈਨ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਲੱਗੂਗਾ, ਦੈਨ अपना ऑब्जेक्ट आ जाऊगा यू, देन वर्ब्स थर्ड फॉर्म, देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आ गया एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इंट्रोगेशन मार्क। नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल देखो, डज ही हेल्प यू। नाउ he is a subject, help is verb's first form, you is object, and this is the interrogation mark. So does will be changed into are because it is present indefinite tense, that's why we will use is mr at the starting of the sentence। ਰਾਜੇ ਆਪਾਂ is mr ਉਦੋਂ यूज़ करना ਜਦੋਂ ਸੈਂਟੈਂਸ does ਦੇ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, does ਜਾਂ do ਦੇ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ is mr यूज़ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ who ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ by whom यूज़ ਕਰਾਂਗੇ। सो are ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ऑब्जेक्ट ਕੀ ਹੈ you, then verbs third form ਕੀ ਆ ਜੂਗੀ helped, then preposition by, then subject will be converted into him, he will be converted into him। so ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਰਾਜੇ, are you helped by him। ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪੈਸਿਵ ਵੌਇਸ, ਆ ਕੀ ਸੀ ਐਕਟਿਵ, ਆ ਕੀ ਸੀ ਪੈਸਿਵ। ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸੈਕੰਡ ਟਾਈਪ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੈ ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ। ਜਸਟ ਅ ਮਿਨਟ। All right, so this is the past indefinite tense. Example is, I have taken the similar example so that you can have an idea of changing active voice into passive voice. Who taught you history? Now taught is verb's second form, that's why it is called past indefinite. So who will be changed into by whom? After that helping verb, that will be were because we are going to use you। then वर्ब तो बाद आप की लिखांगे, तो ऑब्जेक्ट जो कि है यू, फिर की आ जाऊगा राजे वर्ब की जी सैकेंड फॉर्म से वो आप थर्ड लिख देंगे टॉट, दैन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस की बन गया तो सेंटेंस टोटल, बाय होम वर यू टॉट हिस्ट्री, दैन इंट्रोगेशन मार्क। सैकेंड एग्जाम्पल देखो ये हूँ, देखो प्रेजेंट के तो आप डू डज यूज़ करते हैं है ना। हूँ ये आप यूज़ करा, ये आप यूज़ करा डिड, डिड ही हेल्प यू। ही की आ गया सब्जेक्ट, हेल्प की आ गया वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म, तो यू की आ गया ऑब्जेक्ट। डिड नूं काहदे विच चेंज करांगे, जिवें उहदे विच डज सीगा उहनूं आपां चेंज कीता इज एम आर दे विच, डिड लग्गिया होया तां आपां चेंज करांगे वॉज वर दे विच। आपां इत्थे वर लगाया क्यों, क्योंकि जिहड़ा ऑब्जेक्ट आ वो यू आ। ठीक है, वर यू, वर्ब्स थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, देन प्रपोजिशन बाय, देन द सब्जेक्ट ही विल बी कन्वर्टेड इनटू हिम। ऑलराइट, ऑल राइट स्टूडेंट्स, हूँ आप करते हैं नैक्सट राजे थर्ड टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट। यदि एग्जाम्पल देखो, हू विल टीच यू हिस्ट्री, सेम एग्जाम्पल आ। ठीक है, हू कि चेंज होगा बाय होम के, उदों बाद की आ जाऊगा हैल्पिंग वर्ब विल, पर जो फ्यूचर इंडेफिनिट आ वो आप विल दे नाल बी लगानी है, करके पहला की आ गया विल, उदों बाद ऑब्जेक्ट, दैन बी, ऑब्जेक्ट तो तुरंत बाद बी लगूगा, दैन वर्ब्स थर्ड फॉर्म टॉट, दैन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस हिस्ट्री। की बन गया तो बाय होम विल यू बी टॉट हिस्ट्री। नैक्सट देखो सैकेंड एग्जाम्पल, विल ही हेल्प यू, सेम सेंटेंस आ, विल का रहूगा एज इट इज़ रह जूगा विल दे विच। ठीक है, तो अगर इत्थे आए हुंदा तो इत्थे शैल आ जाना सी, बट इत्थे यू आ तां करके इत्थे विल लगेगा। ओके, विल का कन्वर्ट हो गया विल दे विच, दैन अपना ऑब्जेक्ट की सी यू, ये आ गया फर्स्ट, तो यू नो सबजैक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हुंदा वा एक्टिव दे विच, ते पैसिव दे विच ऑब्जेक्ट वर्ब सबजैक्ट। सो विल तो बाद आ गया तो ऑब्जेक्ट यू, उस तो बाद की होना वा ऑब्जेक्ट तो तुरंत बाद बी,
then verbs third form helped, then preposition by, then ਜਿਹੜਾ subject ਉਹ ਕਾਦੇ ਵਿੱਚ change ਹੋ ਜਾਊਗਾ end ਤੇ ਰਾਜੇ he change ਹੋ ਜਾਊਗਾ him ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ will you be helped by him। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਾਜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੌਇਸ ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਆ ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਆ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਕੀਤੇ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਆ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕੀਤੇ ਆ ਰਾਜੇ ਹੂ ਵਾਲੇ, ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਾਂ ਕੀਤੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਡੂ ਡਜ਼ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਲ ਸ਼ੈਲ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਰਨ ਕਰ ਲਿਓ ਤੇ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੋਟਬੁੱਕਸ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਿਓ। ਆਲ ਰਾਈਟ ਬੇਟਾ, ਗॉड ब्लेस यू।